Hello friends, welcome to my Japanese language class. This program for JLPT N4 students and not N4 students. Now we are going to learn lesson 43 or Dai Yonju Sanka. In this lesson we are going to learn verb mass form, e adjective, you will omit, na adjective, na omit, so this. Verb they form kimas and some kanji. Let's start grammar. Before enter to the grammar, please learn the vocabulary of this lesson. It will help you to understand the grammar properly. आप ग्रामर पढ़ने से पहले लेसन का पूरे vocabulary पढ़ लीजिए और आपको मदद करेगा इसको समझने के लिए, ठीक है. Verb mass form, e adjective, na adjective. E and na should not be there. So this. When speaker gives statement on the base of supposition, this grammar pattern using. The supposition basically based on the appearance of the thing, person, scene, etc. Meaning is, when a speaker gives some statement, says something on the basis of his or her supposition, this grammar form is using. And the supposition based on the appearance of the things, the scene of the things, the appearance of the person, like this. इसका मतलब है अगर कोई स्पीकर कुछ बोलते हैं या फिर कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं किसी सपोज करके, गेस करके, किसको देखकर, वही ग्रामर पैटर्न हम यूज करते हैं. और उनका सपोजिशन का बेसमेंट क्या होता है? सपोजिशन का बेस होता है अपीयरेंस होता है, पर्सन का अपीयरेंस हो या फिर पर्सन थिंग्स का अपीयरेंस हो, और सीन, कुछ सीन को देखकर अगर कुछ स्पीकर कुछ बोलते हैं तो वही ग्रामर फॉर्म यूज होता है, ठीक है. Comes to sentence. Imanimo higa kieso desu. It looks like the fire will extinguish soon. इसका मतलब है आप देख रहे हो कि फायर शायद बुझने जा रहे हैं या फिर the fire is going to extinguish. You are seeing this thing. You are seeing the appearance of the fire. So what you will say? Imanimo higa. He. This kanji reading is he. This is ima. Imanimo higa kieso desu. It looks like the fire will extinguish soon. लग रहा है कि आग बुझ जा रही है, ठीक है, ऐसा. Some more sentence. Nimotsu. Nimotsu ga ochiso desu. Ochimasu, ochiso desu. इस ग्रामर में वर्ब जाएगा मास फॉर्म, ठीक है. निमोचु का ओचिसो देस. इट लुक्स लाइक द पार्सल विल फेल डाउन, ठीक है. कोतोशिवा, दिस इज कोतोशी. कोतोशिवा यूनियु का हेरिसो देस. इट सीम्स द इंपोर्ट विल डिक्रीज दिस ईयर. कोतोशिवा यूनियु का हेरिसो देस. हेरिमास, ओमिटमास, हेरी. हेरिसो देस. इट सीम्स द इंपोर्ट विल डिक्रीज दिस ईयर. इसको अगर हम बोलेंगे तो लग रहा है कि निमोचो जो पार्सल है गिर जाएगी. सपोज एक ट्रक जा रहा है, पूरे फुल ऑफ पार्सल है, सो एक पार्सल गिरने की बराबर की जैसे है, तो क्या बोल रहे हो कि हाँ, इट लग रहा है कि वो पार्सल गिर जाएगी, ठीक है ना. इस तरह का जैसे हम पैकिंग कर रहे हैं तो एक पार्सल गिरने वाला है, हमको वो अपीयरेंस देख के हम बोलते कि हाँ शायद वो गिर जाएगी, मे बी इट विल फेल डाउन. सो ओची सोतेस, ठीक है. कोतोशिया यूनियुगा हेरी सोतेस मतलब लगता है दिस ईयर इंपोर्ट विल डिक्रीज, ओके.
we see the diagram, we analysis the import export everything, so then we find that yeah, maybe the import will decrease this appearance. So the grammar form where verb mass form, so this we used where we say something on based on our guess. ठीक है, हम जो देखते हैं कुछ appearance, इसको जो हम guess करते हैं, based on the guess we make this statement or make this sentence. Okay, verb mass form, so this. Hope all of you understand. Please pause the video and write 3-4 sentences. Okay, verb mass form, using verb mass form, so this grammar. Okay, let's learn. E adjective, na adjective, so this. E and na will be omit. There should not be E in a adjective and na in na adjective. Okay. Meaning is, although something has not been confirmed as fact, but it looks so judging from the appearance. ये जो सेंटेंस है हम कहाँ यूज करते हैं? दिस सेंटेंस वेयर वी यूज actually it is not happen in fact, or actually it is not happen, or maybe or may not be, but when we look the things we judge something, and our judgment we explain in this grammar form. हम कुछ चीज देखते हैं, हम इसको देख के बोलते हैं, लेकिन शायद इन एक्चुअली वो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. हम अपीयरेंस को देखते हैं, हम इसको साइज देखते हैं, हाइट देख के बोलते हैं या फिर कुछ देख के बोलते हैं, तो वो जजमेंट जो हम जज करके बोलते हैं किसी को, दैट फॉर्म सो दिस ग्रामर फॉर्म में हम यूज करते हैं. ठीक है, चलो लेट्स लर्न सम सेंटेंस. कोनो होनवा कांजीगा ओ कुत्ते मुजुकासी सोतेस. This book has lot of kanji, seems like difficult. This book has lot of kanji, it seems difficult. कोनो होनवा कांजीगा ओ कुत्ते मुजुकासी सोतेस. देखो सी के बाद ई नहीं आया है. ठीक है, ये जो बुक है इसमें बहुत सारे कांजी है. ओ कुत्ते, इट सीम्स दैट इट इज डिफिकल्ट. लेकिन हमने बुक नहीं देखा है, हमने बुक नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ देख लिया कि हाँ कांजी ज्यादा है, हाँ मे बी इट इज डिफिकल्ट. ठीक है, इट लुक्स लाइक डिफिकल्ट, इट सीम्स लाइक डिफिकल्ट. अगर हम पढ़े होते या फिर हम पढ़े होते तो शायद हमको पता चलता एक्चुअली इट इज डिफिकल्ट और नॉट. बट हमने सिर्फ देखा है कांजी बहुत ज्यादा है. मुजुकासी सोतेस, इट सीम्स डिफिकल्ट. ओके, नाउ यू गेटिंग इट. वी डू नॉट लर्न द बुक, वी डू नॉट रीड द बुक, वी जस्ट लुक सी द बुक. We find that there are so many kanjis are there. Whether this kanji are easy kanji or difficult kanji, that thing also we do not know. But we find so many kanjis are there. It seems it is difficult. We just judge something. We just give our judgment. There are lot of kanji. It seems that book is difficult. Okay. This thing, this kind of sentence we explain with this grammar form. ठीक है, इस तरह का सेंटेंस पैटर्न हम इसी ग्रामर फॉर्म में यूज करते हैं. ठीक है, लेट्स लर्न मोर सेंटेंस. कोनो नाइफ हुआ हासामी गा चुईते बेंड्री सोदेस. दिस नाइफ सीम्स टू बी कन्वीनियंट as scissor is attached with it. नेक्स्ट, कोनो चुकुए का जोबू सोदेस. द टेबल लुक्स स्ट्रॉन्ग. ये जो सीजर है इसमें कोनो नाइफ हुआ हासामिगा चुईते मीन्स दैट सीजर इज अटैच्ड विथ दिस नाइफ. बेंडी सो दिस.
we do not check whether that scissor is convenient or not. We do not use that things. We just find, yeah, this is the knife and scissor also attached with this knife. So it seems it is convenient. हो सकता है वो convenient नहीं हो. Maybe it won't be, but we see the appearance of the things and we see when we show this. Okay? हमने सिर्फ देखा और बोल दिए ऐसा. हम गेस करके बोले. हमारा गेस कहाँ पे है? हमारा गेस बेस्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ द थिंग्स. ठीक है. नेक्स्ट, कोनो चुकुएगा जोबु सोदेस. चुकुएगा जोबु. जोबु मीन स्ट्रांग. हमने देखा टेबल का थिकनेस ज़्यादा है और थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है, तो वी से द टेबल लुक स्ट्रांग. नेक्स्ट, बहुत तेफन कीमास. This grammar form means to go somewhere, do something and come back. इस ग्रामर का मीनिंग है we go somewhere and finish some action over there and come back to our original place. इस ग्रामर का मतलब है हम कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ काम करते हैं और फिर बैक आते हैं, कम बैक करते हैं. यहाँ पे बहुत तेफन कीमास इसी ग्रामर यूज होता है. ठीक है. कम्स टू सेंटेंस. चोत्तो पानो कात्ते कीमास. आई एम गोइंग टू बाय ब्रेड एंड कम बैक. सपोज दिस पर्सन एट होम. ही सेज चोत्तो पानो कात्ते कीमास. इट मीन्स आई एम गोइंग टू हियर. सपोज दिस इज शॉप and he purchased pan over here and again come back. Total action is meaning in this sentence. Chotto pano katte kimasu. इसका it means this person going to shop, purchasing the bread and come back. इसका मतलब है ये बंदा वो जाते हैं शॉप में पान खरीदते और बैक करते ओरिजिनल प्लेस को. ओके. कात्ते कीमास. कीमास कात्ते कीमास. आई एम गोइंग, बाइंग एंड कमिंग बैक. ओके. मैं जा रही हूँ, खरीद के आ रही हूँ. ठीक है. देंसानो जिकानो मित्ते कीमास. आई एम गोइंग टू चेक द ट्रेन टाइम एंड कम बैक. डेपातोए इत्ते कीमास. आई एम गोइंग टू डिपार्टमेंट स्टोर एंड कम बैक. Suppose you say that yeah, I am going and checking the train time. So आप you go check the train time and come back. So मित्ते कीमास. इसका मतलब है मैं जाके ट्रेन का टाइम देख के आती हूँ ऐसा. Here देपातोए इत्ते कीमास. I am going to department store and coming back. Here I am going to department store and come back. So यहाँ पे जाके काम करके अगेन रिटर्न करना. इसका मतलब है पूरे दोनों एक्शन का, जाना एंड आना. गोइंग एंड कम बैक, बोथ एक्शन इज इन्वॉल्व इन दिस ग्रामर. अंडरस्टूड? वर्ब तेफन कीमास. होप यू अंडरस्टैंड वर्ब तेफन कीमास. पॉज द वीडियो एंड राइट 3-4 सेंटेंस so you can understand nicely. आप वीडियो पॉज करके 3-4 सेंटेंस लिख लीजिए, so आप अच्छे से समझ जाएंगे और कहाँ पे यूज करना है वो भी समझ जाएंगे. Here I have given some question answer. Please do it. Kakko no naka ni tekito na kotoba o irenasai. Fill the gap with appropriate word. Pause the video and do it by yourself. After you finish this, check with the answer I have given over here. Okay? Ichiban kara rokuban made jibun de yatte kudasai. Answer: Ichiban konoho no chumarana so desu kara kaimasen. 2番 kono ningyō wa omiyage ni choudo yosasou desu ne. 3番 sono nimochu wa omosou desu ne. 手伝いましょうか。4番、鈴木さん、気分が悪そうですね。疲れたんですか。
5番、あの2人は先月結婚したんです。とっても幸せそうですね。5番、この彼は辛そうですが、実はそんなに辛くないんです。Okay? Hope all of you done correctly. Here also some questions I have given. Please do it and check with the answer after you finish it. Okay? आप पहले खुद कीजिए, इसके बाद आंसर के साथ चेक कीजिए. मैंने यहाँ पे दिया है. Fill the gap with correct sentence. Okay? Done. Check with the answer. 1番、パンがなくなったので買ってきます。2番、部屋の冷房を消すのを忘れたので消してきます。3番、鍵をかけたかどうか見てきます。4番、旅行に行ったらお土産を買ってきてくださいね。5番、ちょっとポストまで行ってこの手紙を出してきます。6番、ちょっとうちに電話をかけてきます。今日は残業しますから。7番、空港へ友達を迎えに行ってきます。Okay? Hope all of you done correctly. Okay? Next. Some kanji. Meaning of this kanji: public, official, kunyomi oyake, onyomi ko. Ko-ritsu, public. Meaning of this kanji: garden, kunyomi sono, onyomi en, ko-en, park. Meaning of this kanji: dwell, inhabit, kunyomi sumu, onyomi zu, zutaku, housing. Meaning of this kanji: place, kunyomi tokoro, onyomi so-jo, dai-dokoro, kitchen. Meaning of the kanji: number, order. There is no kunyomi, onyomi ban, bangumi, program. Meaning of the kanji: call, naming, order, kunyomi, no kunyomi, onyomi, go, sin, go, traffic light. Today's lesson is this much. Now the time to say sayonara. Let's meet in next class with a new lesson, new grammar, some new exercise and some kanji. Till that time, stay healthy, stay safely. Sayonara. Goodbye.